start a new chapter, and name of the chapter is geometry. So geometry जो है, it's actually a branch of mathematics. ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं. We study the different fields of shape. Alright, इसमें हम shapes, sizes, ठीक है. We learn about the position, angle, and dimensions. Alright, so these are the things that we study in the branch of mathematics that is called the geometry. Alright, so let's start with our lesson. We are going to learn what line is. Alright, line में क्या होती है and what are the characteristic of a line. Alright, so a line is a straight path, ठीक है, without thickness. Line एक straight path को कहते हैं. Alright, and it does not have a thickness. मतलब इसकी thickness नहीं होती. It can be a straight path. ठीक है, हो सकता है कि line आपकी जो है वो straight हो बिल्कुल. Alright, तो उसको हम क्या कहेंगे कि it's a straight line. Alright, it's actually one dimensional figure. ठीक है, line क्या होती है, it's actually one dimensional figure. Alright, and which has length but not width. ये हम discuss कर चुके हैं कि ये length में तो होती है but width में it's not focusing on the width part. Alright, plus it does not have any curves. आप देख सकते हैं the lines are straight, so we can say over here that no curves or no मतलब कहीं से bent नहीं होती. Alright, so these are some of the straight lines that you can see on your screen. Alright, so let's move on to the next slide. We're gonna learn what line segment is. Alright, so a line segment is a line section that can link 2 points. ठीक है, लाइन सेगमेंट जो है वो ऐसा लाइन का पार्ट है. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का ऐसा पार्ट है जिसमें इट हैज टू एंड पॉइंट्स. ठीक है, उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी अ सर्कल ओवर हियर एंड अ पॉइंट ओवर हियर. राइट, सो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके टू एंड पॉइंट्स जो है मेंशन किए हुए हैं. ठीक है, तो ये एंड पॉइंट्स जो है यू कैन even name it that it's A point and this is B point. You can say it like that as well. ठीक है, और जो है is a part of a line. ये एक line का part होती है. ठीक है, it has no end point and extends endlessly in both direction. ठीक है, इसका ये है कि आप इस points को जो है, इस line को जो है वो extend कर सकते हो. और इसके अलावा if you mark 2 points A and B on it and pick this segment separately, it becomes a line segment. यानी अगर ये line further जाती है तो इनमें से line segment आप किस चीज़ को कहोगे, ये point A से लेके point B तक, this is the line segment. ठीक है, इस part को हम क्या कहेंगे, line segment. इसको हमने separate कर दिया है, इसको हमने 2 end points दे दिए हैं separately from the line. Alright, this line segment has two endpoints A and B whose length is fixed. ठीक है, जो line segment है ना उसकी length fixed है. इधर से लेकर A से लेकर B तक की length है उसकी, लेकिन जो बाकी length of the line है that might be different. ठीक है, वो कोई fixed नहीं होगी, that can be different. Alright, so next we have ray. What is a ray?
रे का कॉन्सेप्ट यू गाइज माइट हैव ऑलरेडी लर्न इन साइंस एज वेल, जिसमें हम लाइट एनर्जी को पढ़ रहे थे और उसमें ये कॉन्सेप्ट आया था दैट वाज रिलेटेड टू रे। तो रे क्या होता है? रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे पार्ट ऑफ लाइन है जिसमें एक जो है वो एंड पॉइंट होता है, ऑलराइट, एंड एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन विदाउट एंडिंग। ठीक है, और एक डायरेक्शन में विदाउट एंडिंग जो है वो एक्सटेंड करता जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट ओवर हियर, दिस वन इज द स्टार्टिंग वन, दिस इज द सेकंड पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से जो है आगे लाइन एक्सटेंड करती जाएगी, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला है दैट इज द पॉइंट जहाँ पे ये लाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इससे पहले देयर इज नो लाइन, ऑलराइट, देयर इज नो लाइन बिफोर दैट, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। और इस ये जब चलता जाता है द रे will keep on moving। ठीक है, the line will keep on moving and it extends until you know the length is not fixed, alright। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनमें से ओनली वन पॉइंट्स वन एंड पॉइंट जो है वो एक्सटेंड करता है और दूसरी की जो है विदाउट एंडिंग है। हम लिख देते हैं that this one is without ending and the other one it has no fixed length, all right। So guys, this is what we have learned so far. We will do some practice and examples of the line segment in the upcoming video. See you guys and stay tuned.